हेलो एवरीवन, दैट्स मी बैक अगेन विद दी सेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं E2 मैकेनिज्म से फिर से। ओके, सो बेसिकली दिस इज द कंपाउंड इन फ्रंट ऑफ यू। यू हैव लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड। ओके, इस रिएक्शन में हम यूज करेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस जो फैसिलिटेट करेगा एलिमिनेशन, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। सो हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो कैन यू सी द बेस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस, राइट? क्योंकि वो हाइड्रोजन निकाल रहा है, राइट? सो इट्स गोइंग टू अटैक द हाइड्रोजन, राइट? सो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो Br और हाइड्रोजन, राइट, बेसिकली जो हाइड्रोजन निकाला जा रहा है, दे आर बेसिकली ऑन द ऑपोजिट साइन, सो इट इज कॉल्ड एज एंटी पेरीप्लेनार। सो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होता है और Br इजीली निकल के जा सकता है, राइट? सो दैट इज द रीजन एंटी पेरीप्लेनार structural pattern is more preferred, right? So base ने अटैक किया। now this is going to be very slow step। तो आप देख रहे हैं concerted step जिसमें bond formation और bond breaking एक साथ हो रहा है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर आप देख रहे हो तो चार एटम्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम ऑन द बीटा कार्बन, राइट? एंड देन देयर आर टू कार्बन एटम्स जिनके बीच में बन रहा है एक डबल बॉन्ड, एंड देन यू हैव द कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो कि है ब्रेक हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट इज कंप्लीटली इवॉल्विंग अंडर फोर एटम्स, right? Hydrogen, halogen, and then two carbon atoms, right? And the resultant particular compound is basically an alkene. That's what you are getting over here, right? So this is basically the very simple E2 reaction. ओके, अब हम देखते हैं कुछ और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। सबसे पहला स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है हाइड्रोजन और हैलोजन जो कि निकलने वाला है, राइट? दे शुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड्स, सो दे आर बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन को और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनार। ओके, तो अगर एंटी पेरीप्लेनार हम जानते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज द अदर वन? द अदर वन इज कॉल्ड एज सिन पेरीप्लेनार व्हिच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो कैन यू सी हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, they are on the same side of the they are on the same side basically of the plane, correct? So this is what you call it as anti-periplanar and syn-periplanar. Next one most important thing, ये जो reaction है ये है regioselective. Okay, regioselective, this basically is a reaction wherein you have a Sadzev product which is obtained over here. If Sadzev product is obtained, आप वैसे भी जानते हैं आपको more substituted alkene मिलना चाहिए, right? So this is basically what you call, करेक्ट? बीटा नॉर्मली हम अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन रहे, बीटा कार्बन रहे, तो वी नॉर्मली फॉलो सेडजेफ रूल जो हमें सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ऐसा बाय प्रोडक्ट दे सके, राइट? सो सबसे फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट द न्यूक्लियोफाइल, राइट? स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंड्रेंस। ओके, ना हिंड्रेंस की अगर हम बात करें तो वैसे भी ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, राइट? तो जैसे मॉलिक्यूल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की तरफ जाए, दिस एलिमिनेशन दैट इज E2 मैकेनिज्म का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है क्योंकि बेसिकली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिमूव द हाइड्रोजन, but the rates may be different. You can say everything depends on the strength of the base. So stronger bases, let me repeat, stronger bases are going to give you E2 mechanisms more. Okay, exactly opposite tha in the case of SN1, SN2, right? SN2 is given by least sterically hindered substrate. Now this is dependent on the base. Okay, so this was about the strength of the base, and you know when you go from primary to tertiary, the probability for E2 mechanism is going to increase. Everything depends on the base, right? So now let's talk about the stereochemistry. So stereochemistry कैसा होगा? Obviously the group should be anti-periplanar to give you the reaction. ये regioselective reaction है जिसमें आपको मिलता है Sadzev product that is more substituted alkene. Okay, so this was about the E1 mechanism. अब हम देखते हैं energy profile diagram की तरफ। तो सबसे पहले can you see this is the x-axis and then this you have the y-axis in front of you in this particular diagram, right? So now can you see इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एग्जैक्टली मैच होता है SN2 से। सो यू हैव इनिशियल रिएक्टेंट गोइंग टू द ट्रांजिशन स्टेप जो कि है कंसर्टेड मैकेनिज्म, कैन यू सी दैट, एंड देन इट इज कमिंग डाउन ऑटोमेटिकली, राइट? सो दिस इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द रिएक्शन। सो मोर और लेस दोनों सेम है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, एक सब्स्टिट्यूशन एक एलिमिनेशन है, एंड यू नीड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? ना बात करते हैं सॉल्वेंट की। कोई भी इंटरमीडिएट जनरेट हुआ नहीं है तो यू नीड एन अप्रोटिक, राइट? सो यू नीड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ लेट मी समराइज व्हाट हैव यू स्टडीड। फर्स्ट थिंग, the first most important thing, anti-periplanar geometry.
6F product, okay, strong bases and increasing reactivity from primary to tertiary, right? And then the most important regioselective, correct, regioselective concerted mechanism, okay, ये सारे के सारे aspects आपने पढ़ लिए हैं, right? So this was about the E2 mechanism. Next video में हम देखेंगे about the E1 mechanism और उसके बाद हम देखेंगे comparison between E1 and E2. Thank you.